अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस वक्त सिर्फ एक ही बात है कि इलेक्शन कब होंगे, और वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि 14 अगस्त तक की इस असम्बली की मुद्दत है हुकूमत की, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी। क्या अब इलेक्शन के लिए सियासी जमातें तैयार हैं? इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा गया कि वो पूरे पंजाब में हर हल्के में इलेक्शन लड़ने जा रही है, और जो अब पहले बात की जा रही थी कि शायद कुछ सीट एडजस्टमेंट की बात हो या पीडीएम मिलकर कोई इलेक्शन लड़ रही हो, या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनने के बाद ये तासुर दिया जा रहा था, बल्कि मुस्लिम नून के कुछ रहनुमाओं की जानिब से कहा कि उनके साथ वर्किंग रिलेशन अच्छा था और अगले आने वाले वक्त में उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जाएगा। अब क्या सिचुएशन होगी, हम इस पर बात करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब। बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ IMF के मामलात हैं, उस हवाले से भी राना साहब से डिस्कशन होगी। सबसे पहले मुजाहिद बरेलवी साहब, सर अब तो वज़ीर आज़म ने भी ऐलान कर दिया कि हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, और ये अब आज कुछ ही देर पहले हमने खबर ये दी कि 12 अगस्त की रात को शायद असम्बली तहलील हो जाए तो 90 दिन के मामलात हो जाएं। तो सर 2023 के इलेक्शन फिर 2023 में होते नज़र आ रहे हैं अब नवंबर में। बरेलवी साहब, आप तक आवाज़ आ रही है सर? मुजाहिद बरेलवी साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। राना एहसान साहब, सर फिर हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है, बहुत कयास सराइयाँ हो रही थी कि शायद 1 साल आप लोग मज़ीद ले लें किसी तरह से, ये तो अब निगरान सेटअप भी सर फिर 2-3 माह का है, उसके बाद तो असल हुकूमत फिर आनी है आप लोगों की सियासी जमातों की, जिसने भी जो जीता उसके हिसाब से, तो निगरान सेटअप भी सर 60 या 90 दिन तक ही जाएगा ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने और PMLN के किसी लीडर ने कभी भी नहीं ये कहा था कि मुद्दत असेंबली की जो है वो लंबी होनी चाहिए। इसके ऊपर क्या सराइयाँ होती रहीं, ऑपोजिशन लीडर ने इसके ऊपर बात की, मौलाना साहब ने बात की, लेकिन गवर्नमेंट ने या कैबिनेट मिनिस्टर्स ने मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कभी भी सपोर्ट की है कि जो है असेंबली अपनी मुद्दत जो है वो बढ़ा देगी। अब तो एब्सोल्यूट क्लैरिटी है इस मामले में। शहबाज शरीफ अनाउंस किया है कि ये अगस्त के अंदर जो है ये हुकूमत अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर लेगी, और चंद दिन पहले जो है वो असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी, जिससे 90 दिन का पीरियड जो है वो मिल जाएगा। देखिए, बिल्कुल आइन के मुताबिक इलेक्शन कमिशन ने डेट अनाउंस करनी है, और 60 से 90 दिन का वो टाइम फ्रेम पर बनता है। क्यों हासिल करना चाह रहे हैं? 60 दिन इनफ नहीं होंगे कि आप सियासी जमातों की वर्किंग के लिए? आप तो गवर्नमेंट में हैं, अभी जो इकदामात हैं खासतौर पर IMF के मामलात हैं, ये तो आपके प्लस ही जाते हैं, तो फिर 90 दिन क्यों? मुद्दत पूरी हो जाए और उसके बाद फिर 60 दिन ही, इसकी क्या लॉजिक या साइंस? 90 दिन, देखिए 90 दिन की सिर्फ टाइम फ्रेम मिलता है, ये इसका मकसद नहीं है कि 90 दिन बाद ही इलेक्शन होगा। ये तो इलेक्शन कमीशन को एक फैसिलिटेशन हो जाती है कि वो अगर अपनी तैयारी 60 दिन में समझता है मुकम्मल कर लेगा तो वो 60 दिन का अनाउंसमेंट कर लेगा। अगर वो समझेगा कि 70वें दिन जो है वो तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, वो 70 डेज की अनाउंसमेंट कर लेगा। ये इख्तियार हुकूमत के पास नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन के पास है। तो आप उसको सिर्फ एक फैसिलिटेशन ये दे रहे हैं कि वो 60 या मैक्सिमम 90 दिन तक वो इलेक्शन को डिले कर सकता है इनके मुताबिक। और डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि केयर टेकर सेटअप जो है वो एक्सटेंड हो या वो अपनी मुद्दत आगे बढ़ा ले। कोई वजह ऐसी बनती नहीं है, बज़ाहिर अब नजर नहीं आती। राना सनाउल्लाह साहब ने ऐलान किया कि हर हल्के पंजाब से जो है वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो इसका मतलब है कि जो PDM में इत्तेहाद है, चाहे वो मौलाना साहब की जमात हो या एक नई जमात जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी या दीगर हैं, आप अपना इलेक्शन पंजाब में फुल फ्लैज, चाहे फैसलाबाद हो, लाहौर हो या फिर डेरा गाजी खान, अपना ही इलेक्शन लड़ेंगे? सोलो फ्लाइट के साथ आ रहे हैं? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, हम अगर सीट एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो वो पंजाब में हम क्यों करते हैं? अगर सीट एडजस्टमेंट होनी है तो वो तो बलूचिस्तान में भी होनी चाहिए, वो फिर पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में भी होनी चाहिए है, वो KPK में भी होनी चाहिए। तो देखें, खाली ये तो मुमकिन नहीं है कि पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट हो, और वो क्यों हो?
देखें, हर पार्टी को अपना मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए। बाद में कोई कोलिशन हुकूमत बनती है या ये जो कोलिशन हुकूमत है, डेफिनेटली आप मुल्क के मफाद के लिए इकट्ठे होते हैं, लेकिन ये पार्टीज मुख्तलिफ पार्टीज हैं और अपना अपना मैनिफेस्टो है, अपना अपना एजेंडा है। बाद में जाके इकट्ठे हो जाए वो एक अलग चीज है। लेकिन सीट एडजस्टमेंट की जहां तक बात है, पीएमएलएन पंजाब में इस चीज की जरूरत नहीं महसूस करती और वो क्यों अपना स्टेक जो है वो दूसरी जमातों के साथ शेयर करें। और अगर शेयर होना है, अगर ये होना ही है, तो फिर क्यों ना ये सिंध में हो, क्यों ना ये बलोचिस्तान में हो, क्यों ना ये केपीके में हो, क्यों ना ये जीपी में हो, क्यों ना ये कश्मीर में हो। तो खाली पंजाब की तो कोई बात नहीं बनती। तो इसलिए कोई सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात जो हैं एज अ पार्टी, पंजाब आपका मजबूत ग्राउंड है मुस्लिम नून का, तो यहाँ तो बिल्कुल भी मुस्लिम नून के फायदे के लिए नहीं है कि किसी तरह सीट एडजस्टमेंट का मामला। मुजाहिद बरेलवी साहब से हमारा रब्ता हुआ है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ हैं। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया बरेलवी साहब के 14 अगस्त मुद्दत है, तो अब ये भी शुनीद है कि शायद 12 अगस्त तक ऐलान हो जाए, तहलील हो जाएँ असम्बलियाँ और फिर अगले आने वाले इलेक्शन जो है वो 60 या 90 दिनों के अंदर हो जाएँ। तो सर फिर 2023 तो इलेक्शन का साल हो रहा है, अब सियासी जमातें भी तैयार हैं, ये निगरान सेटअप तो सर 90 दिन में ही रहेगा या कोई खदशात इस पे हो सकते हैं? बात इतनी साफ और सीधी होती तो लोगों के जहनों में इतने इबाम क्यों होते, क्योंकि लोगों को मई का तजर्बा है कि पार्लियामेंट में खड़े होकर तमाम जमातों ने कहा जनाब हम वो जो पंजाब और केपी के इलेक्शन थे आइन कानून के मुताबिक जो होने थे उसके खिलाफ उन्होंने कहा हम ये नहीं होने देंगे। और फिर आपने देखा होगा कि पुअर इलेक्शन कमीशन इतना कमजोर, उसके सरबराह इतने बेबस थे कि वो 1 अरब रुपए मांग रहे थे वजारत दिफा से, वजारत तालीम से, कह रहे थे असादा दो, वजारत सेक्रेटरी दे दो, तीनों ने इनकार कर दिया। तो उस इलेक्शन से 2 दिन पहले आपको याद होगा कि बल्कि 24 घंटे पहले तक एक तरह के निशान दिए जा रहे हैं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, वो इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए इसी हुकूमत के दौर में। अभी एक बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है, कुछ चीजें साफ शफाफ हुई हैं मियां साहब के बयान से, लेकिन अभी तक वो मामला तय नहीं हो चुके हैं जो मियां नवाज शरीफ जो पूरी तौर पर ये चाहते हैं कि इस इलेक्शन में उनका कलीदी किरदार हो। नून लीग चाहती है कि उनका कलीदी किरदार हो, वो वादे हो सके। क्या मियां साहब आएंगे 14 अगस्त से पहले? बहुत बड़ा सवाल है। देखा सेटअप क्या बनेगा, वो यकीनन नून लीग और पीस पार्टी का नहीं बनेगा। फिर क्या अगला अगर मियां साहब आएंगे तो उनके साथ क्या सलूक होगा, इसका फैसला इसलिए वहां पे शिकार है कि 14 सितंबर तक मौजूदा चीफ है जिस अदलिया को जिसको नून लीग अपना शुक्रवार दुश्मन समझती है। फिर 60 दिन हो या 90 दिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 14 अगस्त को अगर असम्बलियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी, उसको किसी आइन और कानून की जरूरत नहीं है, तो उन्हें 60 दिन में इलेक्शन कराने होंगे। लेकिन 2-3 दिन पहले जैसे कि पीस पार्टी 8 और कह रही है तो 90 दिन में इलेक्शन होंगे। तो ये जो आप बिल्कुल, और सबसे बढ़कर आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, आंखों पे पट्टियां और कानों में शायद गालिबन हमारे दोस्तों ने रुई भर ली है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर जो 2002 के बाद पाकिस्तान में था। और आप देखें भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई 79 में, 85 तक 16 साल तक इलेक्शन नहीं हुए थे, कहीं 88 में जाके इलेक्शन हुए, वो भी ज़िया उल हक की मौत के बाद। अभी जो अगर एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि एक पार्टी के हाथ पैर बांध कर, जिसका नाम नहीं ले सकते, जिसके बारे में ये वादे नहीं कि वो कालदम हो चुकी है, उसका लीडर इसमें हिस्सा नहीं ले सकता, उसके अराकीन जो जेलों में वो हिस्सा नहीं ले सकते, हम एक कैसे तबल्लुद रख लें कि ये आराम से बंदरबाट इलेक्शन की हो जाएगी। ये तो गुफ्तगू करना है सीट एडजस्टमेंट की, बलूचिस्तान की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, मौलाना की, सॉरी टू से ये फूल पैराडाइज में रहते हैं, ये आसानी से ये फायदा उठा रहे हैं कि यहाँ सॉरी टू से भी समझते हैं कि जब आवाम की यादाश्त बहुत कमजोर है, और आप जैसे सॉरी टू से कुछ जूनियर एंकर साहब की कुछ लोग इनको सवाल कर वो बुनियादी करते नहीं है, जिसका इनको जवाब इनके पास नहीं है। जी बिल्कुल सही। अच्छा, मैं यही चीज़ राना साहब से जान लेते हैं। राना साहब, एक तो मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी क्या हो रही है, दूसरा अगर एक जमात है वो कलअदम हो या ना हो, उसकी सिचुएशन इस जानिब चली गई है, तो फिर इस इलेक्शन पर आप समझते हैं कि क्वेश्चन मार्क नहीं होंगे, ये इलेक्शन साफ शफाफ वाले मामलात होंगे कि एक जमात जिस तरह से टूट रही है या तोड़ दी गई है, तो उसके बाद फिर क्या सिचुएशन इलेक्शन की होगी सर? राना साहब की आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। राना साहब
नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बड़ा सिंपल। राणा साहब साथ रहिएगा, एक नाज़रीन को दे मैं राणा साहब कतई कलामी की माफी, साथ रहिएगा। एक अहम खबर है कि डॉलर की कदर में नुमाया इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 14 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ। गुज़श्ता रोज डॉलर की कीमत में कमी, लेकिन आज एकदम से ओपन मार्केट में रुपए डॉलर महंगा हो गया है और 284 रुपए पर ओपन मार्केट में कीमत जा पहुंची है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 14 पैसे इजाफे के बाद 277 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ है। जी राणा साहब, आप फरमा रहे थे, जी कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। एक जमात जो है वो मुलव्विस पाई गई है 9 मई के वाक़यों के अंदर। उसकी प्लानिंग, उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी अबेटमेंट के अंदर एक जमात जो है वो हिस्सेदार थी, और ये बड़ी मुनज़्ज़म हमला आवर हुए ये फौजी तनसीबात पे मुख्तलिफ शहरों के ऊपर। या तो हम इस पे आंखें बंद कर लें कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, वो सियासी जमात है और ये जमहूरियत के ऊपर दाग होगा कि अगर हम उन पे हाथ डालें, और ये हर सियासी जमात जो है ये काम करना शुरू कर दे तो मुल्क तो मैं समझता हूँ तबाह हो जाएगा। या हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर ये कहना, क्योंकि पीटीआई जो है वो मुनज़्ज़म तौर पे इस चीज में मुलव्विस थी और अब उनका एहतसाब हो रहा है और पकड़ दकड़ हो रही है, जो कि होनी चाहिए, उस पे हम कहें कि ये इलेक्शन रिगिंग है, ये क्या प्री पोल रिगिंग है? नहीं। एक जमात ने हमला आवर हुई, उसके वर्कर हमला आवर हुए, उन्होंने एक कह लें कि रियासत के ऊपर हमला किया, उन्होंने बगावत की। ये तो फिर अगर उनके ऊपर पकड़ दकड़ हो रही है, कानूनी तौर पे अगर कार्रवाई चल रही है, तो उसको आप इलेक्शन रिगिंग नहीं कह सकते। दूसरा इसका जो पिक्चर है वो ये है कि अगर आप आंखें बंद कर लें तो फिर उसके क्या असरात पड़ेंगे इस मुल्क के ऊपर, रियासत के ऊपर, और आइंदा आने वाले दिनों में फिर क्या होगा इसके मुल्की असासों का और अदारों का, अगर आप आंखें बंद कर लें। तो ये बात है। इसके अंदर मैं इसको सही। अच्छा बरेलवी साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे? जी सर। जनाब, एक तो ये कि मैं बिल्कुल उनकी बात से एग्री करता हूँ कि जिन्होंने फौजी तनसीबात में तोड़फोड़ की है, जिन्होंने हंगामा आराई की है, ये जिन लोगों को गिरफ्तार उनके कहने मुताबिक किया है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मुझे ये बताइए कि 70 दिन हो गए हैं कि 70 दिन के बाद क्या उनका किसी ट्रिब्यूनल में केस पेश किया गया? क्या आईजी पंजाब पिंग पोंग खेल रहे थे? क्या इनकी एजेंसियां और निगरान हुकूमतें और उनके इदारे और एजेंसियां पिछले 60 साल से फाइलों के साथ किसी फार्म हाउस में बैठे हुए कोई खेताबाड़ी कर रहे हैं? प्रूफ कहाँ है? मुकदमा कब शुरू करेंगे? ऑडियो वीडियो, मराना साहब बहुत काबिल एहतराम, ऑडियो वीडियो प्रूफ नहीं होता। भुट्टो को फांसी उस वक्त दी गई थी जब मसूद महमूद खड़ा हुआ कि मुझे हुक्म दिया गया था कि जाओ और अहमद रजा कुतुरी को कत्ल करो। यहाँ सुल्तानी गवाह चाहिए। इमरान इस्माइल अली जैदी को और जो लोग सब कुछ हैं वो सुल्तानी गवाह की हैसियत से खड़े हों और कहें कि मुझे, जैसे मुराद रात को कहा कि जाओ और जाके आगे लगाओ, जाओ जाके मारो उन लोगों को। कोई अभी तक सुल्तानी गवाह पेश हुआ? 3 माह बाद जब ना कर सके तो फौजी अदालतों में भेजा। फौजी अदालतों में क्या वकील अभी तक पेश हुए? क्या उनकी फैमिली वाले मिले? मैं इसीलिए कह रहा था कि सॉरी टू से आप अगर जो अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान करने में बिल्कुल वजह तौर पर जायज थे, और हम भी कहते हैं कि उन लोगों को सजा दिया है, लेकिन 60 दिन बाद आप केस ही नहीं पेश कर रहे, साबित ही नहीं कर पा रहे, मुकदमा ही तैयार नहीं हुआ। जनाब 33 औरतें जेलों में अप्रैल मई की गर्मी में, और यहाँ तक ये कहते हैं कि जनाब जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करी, जो बेचारे रह गए, मुझे दे दीजिए आईजी पंजाब समीर इन लोगों को 12 घंटे बिठा लूंगा बगैर पंखे, एसी और लाइट के, और पानी नहीं दूंगा। देखिए कैसे तोते की तरह हर पार्टी का बंदा बोल रहा होगा। तो सर अब ये मामला अदालतों में है, तो अब देखते हैं कि अगले आने वाले। दिस हाफ आवरली क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग, एंड कोई हार्श स्मेल नहीं देती गोल्डन वर्ल्ड हेयर ऑफ हेयर रिमूविंग क्रीम, एंड वेलकम टू मेगा सिटी। बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर आपका कि वो केस अब देखते हैं कि आगे क्या चीजें होती हैं, अब तक नहीं है। क्या आपने 12-14 ऑडियो लोगों को सामने लाके करा दिया कि हाँ इन्होंने कहा था कि हमला करो, इसने कहा था कि करो, इसको मान देंगे लोग अदालती? भाई वो तो उनको तो पेश होना पड़ेगा, गवाह बाकायदा जरा होगी उनपे,
जैसा कि होता है अदालत में, जैसा कि मियां साहब के साथ हुआ था नवाज शरीफ के। उन्होंने हाईजैकिंग नहीं करी थी मियां नवाज मुशर्रफ के जहाज की? सही। सिविल एविएशन अथॉरिटी का चेयरमैन जो था वो गवाह बना था, उसने कहा। अब देखते हैं सर, इधर भी गवाह जो है वो गवाह भी पेश हो जाएंगे। अब जिन्होंने हमला किया वो भी पेश होते हैं, किस तरह से होते हैं। मैं ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। वजाहत बरेलवी साहब, सर शुक्रिया आपका। और राना एहसान साहब हमारे साथ है। कुछ मामला हमने अच्छी तौर पर कुछ डिस्कस करने हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे। इस पर बात करते हैं कि हम किस जानिब जा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं ना जी। हंगू में नरियाब डैम में नहाते हुए 2 बच्चों समेत 3 अफराद डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने तीनों लाशों को निकाल लिया। डूबने वालों में 12 साला याहिया, 13 साला हमजा और 36 साला हकीम शामिल। मुल्तान फैज आलम स्कूल के करीब शहरियों से लूटमार। 2 डाकू शहरियों से नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। सीसीटीवी फुटेज बोल न्यूज पर। डाकू ने मोटरसाइकिल सवार शहरियों को रोक कर लूटमार। स्वीडन वाक़े के खिलाफ असमत कुरान रैली। रावलपिंडी में जामिया रिजविया ज़ियाउल उलूम के अल्लामा पीर सैयद हुसैनुद्दीन की क़यादत में रैली। शुरका की वाक़े की मज़म्मत। स्वीडन का झंडा जला दिया। स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। आम खबर से आपको आगाह करेंगे कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी शेड्यूल जारी कर दिया। आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी 31 जुलाई को पेश की जाएगी। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां साल 14 सितंबर जुमेरात को भी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा। 30 अक्टूबर को भी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। रवां साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी 12 दिसंबर को पेश की जाएगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी शेड्यूल जारी कर दिया है। आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी 31 जुलाई को पेश की जाएगी। रवां साल 14 सितंबर जुमेरात को मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा। 30 अक्टूबर को भी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। रवां साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी 12 दिसंबर को पेश की जाएगी। Some people want more from life. More freedom to choose. More space for life's pleasures. More freshness to enjoy. Introducing the new and bigger Higher Twin Inverter Plus. Featuring twin inverter technology, twin turbofans, ASPE sterilization, and HCS freshness technology that keeps food 2 times fresher. Digital control system with 4 sensors and less than 1 unit a day energy consumption. Higher Twin Inverter Plus. Real freshness leader. Higher. Inspired living. नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग। इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। इस शादी सीजन जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। Stay ahead of hair fall. Introducing new Set and Touch Hair Fall Solution Shampoo Plus Conditioner. The extraordinary touch. Set and Touch. Skin का glamour जगाए Care Beauty Soap. इतना करीब खींच लाया एहसास ये रेशमी सा. मेरा ग्लैमर मेरी स्किन. Care Beauty Soap. 4 महकते अंदाज. केयर से बेहतर क्या? ऐप से नहीं, आप ही से पूछो। बाकी सब छोड़ो, सिया लगाओ। सिया गोल्ड ब्यूटी क्रीम, चेहरा ऐसा शफाफ, बता दी साफ साफ। ब्यूटी ऐप साइट पर। अब हर नजर आप पर। ग्लैमर जगाए Care Beauty Soap. इतना करीब खींच लाया एहसास
चार महकते अंदाज, कैसे बेहतर क्या? ऐप से नहीं, आप ही से पूछो। बाकी सब छोड़ो, सिया लगाओ। सिया गोल्ड ब्यूटी क्रीम, चेहरा ऐसा शफाफ, बता दी साफ साफ। ब्यूटी ऐप साइट पर। अब हर नजर आप पर। कीजिए ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन और बन जाएं कारों के मालिक। काबिले भरोसा खिदमत के लिए रावी एक्सचेंज, राब्ता मुस्कुराहटों का। गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। For which I start with a prayer, a dua from the Holy Quran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina wa qurratu a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. O our sustainer, grant that our spouses and our offspring be a joy to our eyes, and cause us to be foremost amongst those who are conscious of Thee. This is a prayer for a happy family. And what we are aiming at when we speak about a happy family is that the people of Pakistan should also be a happy family. That is why we are concerned as the Supreme Court of Pakistan. Because the object of fundamental rights under the Constitution is ultimately to bring happiness to the people of Pakistan. And that's all we are interested in, the enforcement of fundamental rights. The right to life, the right to a good quality life, the right to livelihood, to all the things that come together to provide the necessaries for a happy life. And not just an individual life. We are talking about a family life. The Constitution talks about in Article 35, which is a principle of policy, that the state has the responsibility to look after the child, to look after the family, the child, and the mother. And we start from that premise as a court responsible for safeguarding the fundamental rights to see that attention is paid to this priority. It is in this context that I am a guest with you today. This conference has been organized by a very dedicated team of workers, officers, and concerned citizens under the leadership of the Law and Justice Commission represented by Ms. Rifat Bhatt, and with the cooperation of the United Nations Fund for Population, and of course the support and cooperation of the Government of Pakistan. This is deeply appreciated because ultimately, as a judge, I'm not just concerned with looking for right and wrong. Yes, in most cases, that may be something that we are looking at. But what we need to know, first of all, in the context of public rights and human rights, what rights there are that need protection, and number two, how can they be protected? Today, I'm looking forward to the discourse that will take place in the 5 sessions that are mentioned in the program. Of course, there'll be talk about the enforcement of our judgment of 2019, but that's not all. I expect that we will be talking about also the success achieved
my Muslim countries like Iran and Bangladesh. How did they achieve that? Why couldn't we achieve it? Both countries are careful about their resources, and yet there was something that they did which managed to receive success, and today I believe they are reversing their policies. And I am thrilled now to discover from Mr. Luab that the narrative today is not population control. It is a concern for the population to be productive so that they can earn their livelihood and contribute to the society and the community. And for that, the requirement is education. But what we need to understand is, how will those goals be achieved? We can't just leave it to the state. The state is already committed with its resources to so many other important priorities. There has to be some other vehicle, some other means of achieving that. I would submit that it's not talked very often about. We just impose things on the government, expect them to do everything. We have to involve the community. We have to involve society in contributing. If you recall the verse from the Holy Quran which was read by Maulana Sahib, it talks about a Muslim's fondness for his wealth and money. It acknowledges that, but it says you must contribute for the poor, for the needy, for those who need help. And above all, in fact, right at the beginning, your relatives. Islam strengthens the bond of the family. We need to reawaken those values. We have become concerned about individualism, about ourselves only. Only a generation ago, all of us, or most of us would remember, that our elders were either supporting or were supported by relatives to get educated. I can say that for my elders. And that was the way forward. What has happened today? But all that I'm trying to emphasize is that when we bring in people into the matrix that will be interacting with society and giving them education, giving them skill-based education, empowering them, it will be then that we will see the fruits in other forms, which is managed families, spacing, choices being exercised, women being respected. That is the process that will take place. It is not for the law to enforce that. And this is not a legal forum also. Yes, if there are solutions before us which are in black and white, we can evaluate their relevance or their propriety or their sufficiency for addressing an issue of rights or for enforcement of rights. But we cannot devise these solutions. It will be people like yourselves who will have to come forward. The time today requires the people of Pakistan to come forward and solve and to offer solutions to the state. If you remember, you will not remember because I don't expect any one of you to have been around in 1947, but we have all read that in 1947, when this country was formed, it had no finances.
the partition of India had resulted in no finances being given to us. And do you know who funded the country? It was all private funds. And within 4 years, I read that Pakistan was giving a loan to Germany. In 1971, I read somewhere that Pakistan gave a loan to China. Why? How was it accomplished? It was accomplished because the people of Pakistan felt responsible. Do you know that there was a time when simplicity and thrift were respected? Today, we take pride in extravagance. Our elite leads us in that direction. I think the first step towards contributing to a cause is to become simple yourself. Your personal simplicity generates the surplus to contribute to that cause. We need community service, community involvement, and that's how, through a public-private partnership, I think, in my humble estimation, the issues can be tackled. We must bring in education, and particularly vocational training and skill-based education. In my youth, I remember when we traveled from Lahore to Peshawar, there were at least 24 vocational training centers on the highway. Today we see none. Where have they gone? You see, these are things we must go back to the simple solutions. And our lives and our requirements and needs must be simplified. I don't want to give examples of where, as a citizen, I feel waste is taking place, because that is unnecessary. It's an attitude we must adopt. And I think that during the course of today and tomorrow, inshallah, we will find suggestions that will be useful. These are suggestions, as far as I'm concerned, which will occupy my mind and generate ideas on how I have to protect rights of the people who come to us. If we have one job, and for that there are 1,000 applicants. And do you know, litigation comes up right up to the Supreme Court for how those jobs are to be assigned or allocated or given to applicants. That we have to overcome. We have to create opportunities, we have to create talent and skill so that our population not only provides the services required in Pakistan, but also answers the requirements of jobs abroad. To say that we should reduce our population because it's a strain on resources is wrong. In the 70s, I remember, there was a new initiative. I was a young boy then, but I would read about it, a new initiative for labor to be exported to the Middle East. And that labor was contributing funds to its family, and they were able to run businesses, and they were able to grow and so forth. It was a remarkable experiment. And to this day, that cycle continues, but it has diminished because the level of skills has not improved. I may be getting rather extensive in my submissions. I want to thank you all for being present with us.
I welcome this opportunity because I will be learning from here. Judges need to interact with ideas. We need to understand what are the needs of people and what are the needs of society, and what they are thinking, what the people are thinking, what our intellectuals are thinking. I look forward to a wonderful discourse. And at the end, I thank the Law and Justice Commission, supervised by the fantastic 3-member committee of judges who showed us their managerial and administrative skill. It's very impressive. I congratulate them. I thank also the kind of interest which the UN FPA has taken in this event, and in any case the subject of population concern in Pakistan. The government of Pakistan has been helpful as always, which is also appreciated. Thank you very much. जस्टिस पाकिस्तान उमर अता मंदियाल कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजकल हम महज इनफरादी फ़ायदे के लिए बात करते हैं, हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर डालना भी दुरुस्त रवैया नहीं है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। पार्लर जैसे फेशियल का निखार सिर्फ 10 मिनट में। मेरा पार्लर मेरे पास। गोल्डन पर्ल व्हाइटनिंग अर्जेंट फेशियल। लव योर स्किन। इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी तूत स्याह प्लासम लट्ठी लेके आना। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश गहराई में जाकर डर्ट और ऑयल रिमूव करें। गोल्डन पर्ल मैक्स लाइट मेंस फेस वॉश, लेट योर फेस ग्लो। विगोरियन चिल्ड्रन सिरप में शामिल कुदरती अज्जा जो बच्चों की हड्डियों को मजबूत